these MCQ, these exact differential equation and reducible to exact differential, यहाँ से आगे वाले सभी MCQ हमने सॉल्व किए, मैक्सिमम सॉल्व किए हैं क्लास में, राइट, ऑन द लास्ट फ्राइडे एंड लास्ट फ्राइडे, है ना। ये भी नेक्स्ट का जो पार्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी हमने सॉल्व किया है, राइट। तो अभी बाकी क्या है, ये जो पहला पार्ट है that is related to the order and degree of the differential equation, वो पार्ट बाकी है, और the variable separable form and homogeneous। तो अभी हम can we go through this part, ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इज इट ओके, या दूसरा कुछ आइडिया है आपके पास? यस, बी डिवीजन क्लास सीआर क्लास रिप्रेजेंटेटिव, एनी अदर आइडिया? नो सर, यही करते हैं। चलो कर दे फर्स्ट एग्जांपल, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सब्स्टिट्यूशन मेथड and homogeneous differential equation. A differential equation dy by dx equal to e raised to x minus y plus 3x square e raised to minus y is of the form. Okay, if I take e raised to minus y common, only the terms in x are remaining, so it is in variable separable form. Okay, next, to solve the next differential equation, it is a differential equation of substitution form. What should be the substitution? U equal to x plus y, that will be the substitution. Okay, so B is the correct option. Substitution to solve the differential equation is x plus y is common in both the term, na, which is m dx plus n dy. In both m and n, x plus y is common. Therefore, x plus y equal to u is the substitution. Differential equation number 3, C. Degree of the numerator is 3. Degree of the denominator is also 3. Okay, therefore it is homogeneous differential equation, right? So question number 3 answer is homogeneous differential equation. Next differential equation, C. Degree of the first term is 1, degree of the second term is 1. What about the last term? It is constant term. And what is the degree of constant term? 0. Okay, so degree is 1 1 0. So is it homogeneous? No. Okay, so it is non-homogeneous differential equation. You can check the exactness and you will find that it is not exact. Del m by del y equal to del n by del x is required. You can do that yourself. Okay. Now we'll solve few examples. So let me start writing. So again we are solving MCQs. MCQ of variable separable form. Okay, so what the page number is? 11 है, page number 11 onward in fact. Okay, चलो सॉल्व करते हैं, सिंपल है ये, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं. We'll start with the example number 9. Simultaneously you also start writing with me, you know. dy by dx equal to 1 plus y divided by 1 plus x. सर हाँ बोलो. हाँ बोलो ना. कुछ नहीं वो पेज नहीं दिख रहा था इसलिए पूछा. Okay, dy divided by 1 plus y equal to dx divided by 1 plus x. Variable separable form. Integrate. Add a constant. तो देखते हैं आंसर कौन से फॉर्म में है. यस, 1 प्लस वाई इक्वल टू, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है. 1 प्लस वाई इक्वल टू सी 1 प्लस एक्स.
ठीक है, चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ए ऑप्शन इज करेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 12 सॉल्व करते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 12। y minus x dy by dx equal to 2y plus dy by dx. See, many times whenever this type of examples are there, it is somewhat difficult to understand what should be the first step. So it is always suggested to write dy by dx equal to remaining things, so that we'll understand whether it is in variable separable form or not. Okay, so we'll do that only. So y minus x dy by dx. मला लिंक शेअर करताय काय करताय? कसं आहे? झालं की माझं लेक्चर लवकर आलं की बघा संपली मीटिंग 9:30 ते 5:30 वाजेपासून झाली. आता प्रॉपर नोटीस निघणार लेट मार्क्स वरून. कोणते काय बरं बरं झालं ते सगळे काय काय पळत असेल लवकर. बरं चांगलं. काय? सांग. लिंक तुम्हाला पाठवते. बी डिव्हिजनच्या ग्रुपवर पाठवलीस ना ऑलरेडी. पाठवलेला त्याला जॉइन करतो आहे. हां, मग मी हे एक्झाम्पल सॉल्व झाले की आय लिव्ह. So Gaikwad sir will join within 2 minutes. So by that time we'll solve this example. 2 dy by dx plus x dy by dx. So we can take x plus 2. Acha, we'll write in next, write on next step. 2 plus x dy by dx. So it is now in variable separable form. Okay. So how we can separate the variables like this: dy divided by y equal to dx divided by minus n beyond x side x plus 2. Okay, integrate. See what the integration is. Let me change the page. So yes, log y equal to minus log of x plus 2 plus log of c. So log y equal to log of c divided by x plus 2. So y equal to c divided by x plus 2. You can cross check it here. Okay, where it is? D option, huh? It is in this part. D option is correct. Can cross check it. क्या चाहिए? Yes, Gaikwad sir will start now. Now I will leave. नहीं हो गया लेक्चर, छोड़ ही दिया मैंने, आप आए थे। वो आएगा दोपहर में, उधर का गया है सारे उधर ही। ये टोनर लगाते हैं ना उधर, सर के इधर सब आके कैसे लेंगे ना, फ्रेंड सर बोले तुषार सर, और वो दोपहर को बोले मी ते केला प्रिंट काढले आणि तिथे केलंय ते बघूयात आपण एकदा M1 चं काय करते? ते M1 चं जे आपण आपलं मॅपिंग चेंज केलं हां, आणि नाही आहे तुमच्या ह्याच्यात पण मी बघितलं केलंय ना, पण आपण ते चेंजेस नाही केले ऍटलीस्ट ना हँग झाले. Student, just wait for 2 minutes. Gaikwad sir, कोणाला? हॅलो Gaikwad sir. सरांनी इयरफोन काढले सर. ठीक आहे, एक मिनिट थांबूया, कारण बहुतेक हे मी बंद केलं तर बंद होईल मीटिंग कदाचित.